Hello everyone, welcome to another edition. And today we are taking a class on entrepreneurship for the students of 12th grade. And it's a class from the unit 1. This is class number 4. And today we'll talk about SWOT analysis and environment analysis. Dear students, it's a very important class, again, from the perspective of examination and from the perspective of understanding this subject, that is entrepreneurship. So let's start today's class. This is my brief introduction, and from here we'll start the content. Still, we are continuing with the unit 1, entrepreneurial opportunity, और जो आज की class है SWOT analysis or environment analysis, it is from the same unit. So let's start with the content. But these are the points under discussion. First point will be SWOT analysis framework. Second is environment analysis. Third is key steps of environment analysis. Fourth step is opportunity and project interface. Fifth point is sources of information and environment scanning. And the last one, that's a sixth one, that is evaluating opportunities. So it is a very important class, and I request all the students to go through it once you will have, time with you. So let's start. So बच्चों ये SWOT analysis का framework है. This is the way SWOT analysis work. और शायद आपको पता होगा, शायद ना पता हो, that who has coined this term SWOT analysis, who invented it in 1960. It was Albert Humphrey. I'll write down his name here. Coined by Albert Humphrey. Yeah, it's Albert Humphrey. So, bachcho, this is SWOT analysis framework, and it's an acronym which depends upon SWOT, that is strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So when we talk about strength, when we talk about weaknesses, they are always inside internal. And when we talk about opportunities and threats, they are always outside. And see, it is, given here, internal analysis, strengths and weaknesses. And if we talk about external analysis, so all the opportunities, all the threats, they come from outside. इसका मतलब है कि अगर आप internally prepared हैं, अगर आप internally strong हैं, if you have self-esteem, if you are continuously working on self-improvement, तो obviously you will feel strong from within. और जब आप अंदर से strong feel करेंगे, you will start, approaching opportunities from outside. On the other hand, if you are not improving yourself, if you are not keeping yourself under control, if you are not regularly checking yourself, what will happen? You will become a weak person. And when you'll become a weak person, you will start having threats from outside. And the best point about this analysis or, this framework is, ये फिट होता है एक स्पेसिफिक व्यक्ति के ऊपर भी, और इट इज डीम्ड टू बी फिटेड ओवर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस अंदर से स्ट्रांग होंगी तो बाहर सिर्फ उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अंदर से आप स्ट्रांग कैसे करेंगे अपने आप को, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास टुडे. और अगर अंदर से आप वीक है तो बाहर आपको सिर्फ थ्रेट्स मिलेंगे. और एल्बर्ट हम्फ्रे ने 1960 में जब इसको कॉइन किया, जब इसको डिवाइस किया, तो एक्चुअली इट वाज अ रेवोल्यूशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द पीपल दोज हु आर डिस्टाइंड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. और अगर आपने जीवन में बहुत तरक्की करनी है तो आप स्वॉट एनालिसिस हर महीने किया कीजिए खुद का. एंड इफ यू
know any company, or if your parents are running any companies, so even they should do it, of the companies. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. It's an easiest way to assess where the company is heading or where the person is heading. Okay. So, बच्चों, SWOT analysis framework. Let's move on to the next point. Environment analysis. अब बच्चों जो environment है वो internal भी है, external भी है, और इसको examine करना is very very important. So let's take up point number 1. Now I'll take up definition of environment analysis first. Environment analysis is the process of monitoring the economic and non-economic environment to determine opportunities and threats for an organization. So बच्चों, बाहर की दुनिया में related to economy and related to non-economic factors, what are the changes that are happening? उस हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से कंपनी को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, and then slowly and gradually the company is going to have can avail these opportunities outside. So environment analysis is very important, examining the environment both for economic and non-economic environment outside. इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों डिटेल में लिया है, what is economic environment and what is non-economic environment, and this is very simple. Now the purpose का मतलब है ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कारण है इसको करने का, और वो ये है why. It provides a rational basis for developing goals and strategies for business survival and growth. अब बच्चों, जब आप अपने आप को, खुद को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सीरियसली लोगे, तो आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट स्टडिंग द एनवायरमेंट outside the organization so that you can check the environment inside the organization. And you know what will happen? इसके बेस पे आप प्रैक्टिकल बनेंगे. रैशनल इज प्रैक्टिकल और pragmatic, एक ही मतलब है दोनों. फॉर डेवलपिंग गोल्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अचीव करना है, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, what are the plans you have to develop in order to achieve those goals. आपने survive कैसे करना है, आपने growth oriented कैसे बनना है. It all comes under when you are scanning or when you are analyzing the environment outside. Let's move on to the next point. The economic environment. Now I'm talking about economic and non-economic environment. I have taken up 3 points on economic environment and 2 points on non-economic environment, so that there is nothing that should be left unclear to the students. If something remains unclear to the student, it is going to create a big problem for them. So in your book, they have just talked about economic and non-economic environment, but I have developed content in order to provide you the best opportunities to learn about these two concepts as well. अब पहला concept है economic environment. Economic environment refers to the conditions and the factors that influence the overall performance and the behavior of the economy. तो बच्चों, कुछ ऐसे factors जो overall economy को impact करते हैं, and how to study them, that is very crucial. It includes various elements such as economic growth, inflation, महंगाई, interest rates. आप बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं तो किस इंटरेस्ट रेट पे आप जमा करा सकते हैं, how much interest you are going to levy every year and every month. Employment levels क्या हैं, how many jobs are regularly being generated, how many people are getting employments every now and then. क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे उतनी ही इकोनॉमी की स्पीड बढ़ेगी, और जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतनी ही इकोनॉमी की स्पीड इट विल बिकम स्लो. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो नहीं है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास इज स्टेबल वेयर एवर दे वर अर्लियर एंड दे आर नाउ, स्टेबल हो गए हैं.
physical and monetary policies related to money, how much people are earning, how much people are spending, what is per capita disposable income, and international trade, how much we are importing and how much we are exporting, as a country, is being studied in economic environment of the country. These factors can have a significant impact on businesses, consumers, and overall economic well-being of a country and a region. तो बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा यू नो कॉमर्स से रिलेटेड बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट businesses growing, businesses thriving, interest rates, employment of the people. So it is about overall economic well-being of the country and its people. So economic environment is very important. Likewise, non-economic environment is equally important because they both are integrated, they both are interlinked. Let's take up the non-economic environment. The non-economic environment, on the other hand, encompasses का मतलब है includes all external factors that affect an organization or society but are not directly related to economic activities. कुछ external factors हैं बच्चों जो economic activities से तो परे हैं but इनका impact organizations पर और country की economy पर पड़ता है. और वो क्या है? Social factors, cultural factors, political factors, legal factors, technological and environmental factors. तो सोसाइटी किस तरीके से is growing, what is their level of education, what sort of education they are taking, how many cultures that exist within a country, whether the country is politically stable or unstable, legal system whether it is very stringent or it is flexible, technologically whether the country is growing or the country has become stable from past 5, 6, 10 years, and other environmental factors. They are non-economic environment. They sum up non-economic environment. And wherever we talk about monetary factors, we talk about interest rate, we talk about income distribution, monetary policy, international trade, it is economic environment. Let's move on to the previous one. So बच्चों, last point में हमने पढ़ा था एनवायरमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है. पर्पस यही है, इट प्रोवाइड्स अ pragmatic foundation for developing goals and strategies for business survival and growth. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम environment analysis करें in the form of economic and non-economic environment. तो दोनों को study करना जरूरी है. Otherwise you cannot understand the complete and clear picture what is happening outside in the environment. So let's move on to the next point. 3 key steps of environment analysis. तो अभी हमने पढ़ा environment analysis, economic and non-economic environment. अब हम पढ़ेंगे 3 key steps of environment analysis. तो अगर हमने environment को analyze करना है, examine करना है, understand करना है, so we need to work on these 3 things. The first one is data collection, second one is information processing, and third one is forecasting. So now we're going to look up in details about all these points. Let's take up the first one, that is data collection. Let's take up all these points in detail. Data collection. Data is very important. It is important in present scenario. It is going to be very important in the future, and it was very important in the past. Data is actually a currency that the companies are encashing. Data is very, very important. So the first point is data collection. Data collection involves gathering relevant information. Gathering relevant information. Very, very important phrase. Gathering relevant information from various sources such as surveys, interviews, market research, data repositories, and obtain raw data and facts. तो बच्चों,
किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ डेटा होगा, then we will put ourselves in a position where we can understand the external environment properly, and then we can start generating product and services according to the external environment. That's very, very important. Second point, it includes the systematic collection of. Now, that's a very important phrase once again. अगर आपने कलेक्शन करनी है ही है डेटा की, मतलब एक व्यक्ति ने भी करनी है और एक ऑर्गेनाइजेशन ने भी करनी है, तो इट हैज टू बी a systematic collection of qualitative and quantitative data. क्वालिटी का डेटा हो और बहुत सारी क्वांटिटी में भी होना चाहिए, so that we can keep making analysis one after another to capture insights on customer preferences, market trends, industry performance and other relevant variables. तो अगर हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि कस्टमर्स आजकल क्या प्रेफर कर रहे हैं, मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, व्हाट पीपल आर लाइकिंग एंड व्हाट पीपल आर लाइकिंग लेस, तो हम वही प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर सकेंगे जो लोगों को ज्यादा पसंद। इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, कौन कौन सी इंडस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है या कर पा रही है, what are the stringent norms that has been established, where the the norms has become very flexible. So once you get to know that, you get to know about the industry's performance and other relevant issues. तो ये सब कहाँ से पता चलते हैं? With the help of data. Third point, data collection method may vary, including primary research and secondary research. You people are in 12th standard और आपको पता होगा primary research is properly based on direct data collection. जहां पर आप खुद से डेटा को कलेक्ट करते हैं, that is being considered primary research, and where you just churn out data from available data. You churn out data from the available data, that is secondary research. अगर आप इंटरनेट को यूज करते हैं या और कोई सोर्सेज को यूज करते हैं जहां पे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है और सिर्फ आप उसमें से अपने लिए प्रॉपर डेटा चर्न आउट कर रहे हैं, तो दैट इज अ सेकेंडरी रिसर्च. एंड प्राइमरी रिसर्च इज वेयर यू आर डायरेक्टली कलेक्टिंग डेटा ऑन योर ओन रिसर्च प्राइमरली. तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. इंपॉर्टेंट. Let's move on to the next point. Information processing. अब information जो आपको मिलेगी थ्रू डेटा, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसे एग्जामिन कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है. Information processing refers to the analysis and transformation of collected data into meaningful and actionable insights. तो आपके पास डेटा आ गया है, अब आपको इसको एनालिसिस करना है इसका. whatsoever you have collected seems right to you, आपने उसे यूज करना है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा आ गया है which you find irrelevant, उसको आपने अवॉइड करना. That is what analysis is. It involves organizing, categorizing, structuring the data to identify patterns, trends and relationships. अब it seems very simple कि डेटा है और हमने उसका एनालिसिस करना है. But it is very important, first of all, to understand how the data is being analyzed. तो डेटा को जब एनालाइज करना है तो the first thing is organizing the data. जरूरी नहीं है जो डेटा आपने पहले कलेक्ट किया हो that you want to study first. जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को chronologically, you get to know what is step number 1, step number 2, step number 3, step number 4 and so on. Categorizing data. हर डेटा हर एक सिस्टम के लिए यूजफुल नहीं है, उसकी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी सो दैट दे शुड नॉट गेट मिक्स्ड अप एंड यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो वो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी जहां पर वो डेटा अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. देयर इज अ फॉर्मेट थ्रू व्हिच अ डेटा हैज टू बी एनालाइज्ड. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. So this way you can, process the information from the data. Next point is also very, very important and exclusive.
Through techniques such as data cleaning, data integration, and data analysis, information processing enables the extraction of valuable knowledge from the collected data. तो बच्चों डेटा को क्लीन भी करना पड़ता है. क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई यू जस्ट हैव टू वॉश इट. क्लीनिंग का मतलब है व्हाटसोएवर इज द राइट इंफॉर्मेशन, बिकॉज डेटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा डेटा ऐसा भी आएगा विच इज नॉट रेलिवेंट, विच इज नॉट नीडेड. तो आपने इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना है दैट यू कैन इजिली क्लीन इट. रिक्वायरमेंट का डेटा रख लीजिए और जो नॉन रिक्वायर्ड डेटा है उसे अलग कर दीजिए. डेटा को मर्ज कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कीजिए, एंड देन दैट डेटा गेट enabled to be used further to provide profits. हम पढ़ाई में भी ऐसे ही करते हैं. हम जब सारा चैप्टर पढ़ते हैं, उसे दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, 4 टाइम पढ़ते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली एनालिसिस होना शुरू हो जाता है दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट from the perspective of examination and what is less important. So similar thing happens when you talk about information processing, and it is based on data collection. Third point, forecasting. Forecasting is seeing the future, becoming visionary. So let's take up the first point. Forecasting is the process of estimating future trends. भाई फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स है, क्या होने वाला है, क्या होगा. इवेंट्स और आउटकम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. कुछ पास्ट में आपने स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर काफी चेंजेस कंपनीज ने ऑब्जर्व, तो आपने यही एस्टिमेट लगाना है कि ये आगे फ्यूचर में भी हो सकता. कई प्रोडक्ट्स आप फॉर एग्जांपल ईयर बिगनिंग में खरीदते हैं, तो 2, 3, 4 महीने बाद वो प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ता. तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंपनीज के साथ ऐसा रेगुलरली हो रहा है, तो ये आप फोकस कर सकते हैं कि भैया अगर हम इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे और इसी टाइप की इंडस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू हैपन विद अस एज वेल. तो ये आपको प्लानिंग में हेल्प करेगा, ये आपको फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, सो दैट यू कैन सेव वेरी वैल्यूएबल MTR, मनी टाइम एंड रिसोर्स. पहले भी इस पॉइंट को, इस एक्रोनिम को डिस्कस कर चुका हूं. MTR को, MTR stands for money, time, and resources. And you can form expert judgment. ये भी फूल प्रूफ नहीं है. एक्सपर्ट जजमेंट आप फॉर्म कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस डेटा. It helps organizations anticipate potential changes in the market. आप इसके बेसिस पर जो पॉसिबल होने वाले चेंजेस हैं उन पर फोकस कर सकते हैं. उसको पहले से ही you can check them, demand patterns and other relevant factors to make informed decisions. So you can demand certain patterns through which you can analyze this information properly, और कुछ और relevant factors को आप study करेंगे so that you can take a very well planned decision for the future. And that's the power of collecting data, processing it, and doing forecasting on its basis. So environment analysis के 3 बहुत important points है, key points है. That is data collection, information processing and forecasting. बच्चों जो हमारी बुक्स हैं उनके अंदर इतना डिटेल में नहीं दे रखा, बट बिकॉज यू आर अटेंडिंग माई क्लासेस, यू आर अटेंडिंग कंटेंट फ्रॉम मेब्रिक्स इंडिया सॉल्यूशन, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल दी जाएगी. For that we are just working very very hard for you all. Now after these 3 key points, let's move on to opportunity. Opportunities कैसे आती हैं? When you do project interface. अब जो प्रोजेक्ट इंटरफेस में मैंने इंटरफेस का आपको मीनिंग दे रखा है, a point where meeting and interaction happens. तो बच्चों ये जो प्रोजेक्ट इंटरफेस का डायग्राम गिवन है, इसमें ये बताया गया है कि सी outside its all environment which is full of problems and needs. जब आप
लोगों की प्रॉब्लम और नीड्स को समझेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कर पाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर पाएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये चीजें रिक्वायर्ड है और ये जानना कि ये चीजें नहीं रिक्वायर्ड है। इट इज गोइंग टू मेक अ बिग सेंस फॉर योर वर्क। आर यू गेटिंग इट? दिस आई टर्म एज अवेयरनेस। अवेयरनेस। सेकेंड इज क्रिएटिविटी एंड आइडियाज। जब आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लिया है, अब आपको क्रिएटिव होकर यू हैव टू फॉर्म आइडियाज टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स एंड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट इज यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली डू इनोवेशन एंड जनरेट प्रोडक्ट्स। आप एक ही तरीके के प्रोडक्ट से बहुत देर तक कस्टमर्स को सेटिस्फाइड नहीं रख पाएंगे, तो यू हैव टू कीप इनोवेटिंग एंड कीप क्रिएटिंग बेटर प्रोडक्ट्स एवरी नाउ एंड देन, एंड it is going to project business for you. This is the way you can make yourself stable in the market, and you can manage and maintain your growth in the market. So it is very important for opportunity spotting that you should do environment analysis and understand the problems and the needs of the people. So this is something very important, और बहुत बार बच्चों CBSE में आ भी चुका है. So you should pay attention on this. अब आपके लिए I'll read the content. The flow chart shows that an opportunity received by the entrepreneur should be tested against important environmental parameters to arrive at a sound business choice. तो अगर आपने एक साउंड बिजनेस चॉइस पर आना है तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी. एनवायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स एंड नीड्स को समझना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन where you are generating the required and desired product and services for your customers. This interface is an evaluative process leading to a judgment. Is it a viable idea? Does it make sound business sense? If yes, the entrepreneur can proceed to the next stage of product or service identification. Otherwise, he has to stick to it. अगर आप प्रॉब्लम्स और नीड्स को आइडेंटिफाई करने में असमर्थ हैं, तो यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन, एंड यू हैव टू मेक इट इटरेटिव. So let's move on to the next point. Sources of information for environment scanning. अब हमारे को information किन किन sources से मिलती है? It is from customers, wholesalers, retailers, distributors, consultants, records of the companies, government publications, publications by various financial institutions, and formal studies conducted by strategic planners. तो बच्चों, जब भी हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करेंगे तो ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, जहां पे आप कस्टमर्स के बारे में स्टडी कीजिए, होलसेलर्स के बारे में स्टडी कीजिए, रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में स्टडी कीजिए, so that you can collect the right information for yourself from the environment scan, and then you can start working the same. अब इन सब पॉइंट्स को मैंने डिटेल में लिया है in the next slide. Let's take up all these points in detail. Customers. Customers का क्या रोल है? They provide direct feedback on products and services, experiences, helping business understand preferences and improve satisfaction. तो बच्चों, जो कस्टमर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता है बिजनेस के लिए, वो है डायरेक्ट फीडबैक, whether they are liking products or services, yes or no. If they're liking the products and services, it's okay to continue the same way. And if they're not liking it, it is always good to work on the feedback and keep innovating and keep improving. Second, wholesalers. Wholesalers offer insight on market demand, pricing trends, and product availability, aiding businesses in optimizing supply chain and distribution strategies. अब बच्चों, जब भी होलसेलर्स की बात करेंगे तो हम उन लोगों की बात करेंगे those who are catering to distributors and retailers. तो ये क्या बताते हैं? ये इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द मार्केट, क्या प्राइसिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, इज इट ओके और इट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड और इट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड,
क्या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ठीक है या कम है, तो इससे क्या होता है, बिजनेसेस को ना हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सर्टेन सोप्स यू आर यूजिंग, और आजकल होलसेलर्स के पास तो सोप्स अवेलेबल नहीं, तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं पर है ना, द प्रोडक्शन हैज बिकम ब्लीक, कम हो गई, दैट्स व्हाई द अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर। अगर आपको लगता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, उसका प्राइस बढ़ गया है, तो इसका मतलब है ट्रेंड आजकल उसी टाइप के प्रोडक्ट का है। बच्चों, एक टाइम था जब आप सोप्स यूज किया करते थे, यू नो केक्स आप यूज करते थे ना, सोप केक्स, इस तरीके के सोप्स आते थे। आजकल आप देखते हैं कि बॉडी वॉश आ गए। तो पहले केक्स वर इन ट्रेंड, अब बॉडी वॉश आर इन ट्रेंड। तो कहने का मतलब है, जब भी आप होलसेलर्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं और क्या चीजें मार्केट में से जा रही हैं। रिटेलर्स, retailers provide information on consumer behavior, buying patterns and product preferences, helping businesses adjust marketing strategies and optimizing product placement. अब बच्चों, हमने बहुत बार यू नो बॉर्नवीटा पिया है, बूस्ट पिया है। अब कैसे प्रेफरेंस पता चलेगा कि कस्टमर्स को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमेशा रिटेलर से पूछते हैं कि भैया डिमांड किस चीज की ज्यादा आ रही है। वो कहेगा कि डिमांड एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आ रही है, पर आ रही है 100 ग्राम में, 50 ग्राम में, 200 ग्राम में, 250 ग्राम में, आधा किलो में। तो उस टाइम पर कंपनीज क्या करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, 1 kg के पैक्स भी आते हैं, लाइक दिस, बड़े बड़े पैक्स आते हैं 1 kg के, और छोटे छोटे पाउचेस भी आते हैं, 50 ग्राम के, 100 ग्राम्स के, एंड सो ऑन। तो ये तब पता चलता है जब रिटेलर्स से इंफॉर्मेशन को असेस किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कनेक्ट मैन्युफैक्चरर्स विद रिटेलर्स एंड एंड कस्टमर्स। अब होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेता है, और डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, किसके साथ, रिटेलर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ, ऑफरिंग वैल्यूएबल मार्केट नॉलेज ऑन इन्वेंट्री लेवल्स, डिमांड्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो कहने का मतलब है बच्चों, when you talk about wholesalers, when you talk about retailers, when you talk about distributors, they all are interlinked, they all are interconnected। और जब भी आपने डेटा प्रोसेसिंग करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। आप होलसेलर्स को भी स्टडी करेंगे, आप रिटेलर्स को भी स्टडी करेंगे, और आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी स्टडी करेंगे। उससे आपको अलग अलग लेवल पर यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम स्टडी करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कनेक्ट मैन्युफैक्चरर्स विद रिटेलर्स एंड एंड कस्टमर्स, ऑफरिंग वैल्यूएबल मार्केट नॉलेज, वेरी वैल्यूएबल, इतनी वैल्यूएबल मार्केट नॉलेज है कि मार्केट में कितना इन्वेंट्री लेवल रिटेलर्स मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इन्वेंट्री लेवल ज्यादा हो, स्टॉक ज्यादा रखा जाएगा। मार्केट डिमांड्स कम है, तो स्टॉक कम रखा जाएगा। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज लॉजिस्टिक्स। उसमें आप लॉरीज यूज करते हैं, ट्रक्स यूज करते हैं, स्मॉल वैन्स यूज करते हैं, सुजुकीज यूज करते हैं, तो टेक इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड होलसेलर, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड। कंसल्टेंट्स, अब मार्केट की इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट से कहां मिलती है, कैसे मिलती है। Consultants provide specialized industry expertise, conducting research and analysis to assist businesses in identifying opportunities, analyzing competition and developing strategies. तो जो consultants होते हैं बच्चों, इनके पास specialized knowledge होती है, वो experienced प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्होंने मार्केट में पहले काम किया होता है, रिसर्च किया होता है।
तो वो बता सकते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपटीशन जो आपके साथ काम कर रहा है उसे कैसे एनालाइज करना है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ plans and strategies you have to deploy in order to perform better than them. तो अगर हर मैन्युफैक्चरर ये खुद कर लेता तो कंसल्टेंट्स और एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट अगर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है टू स्कैन द मार्केट, they have a very strong role to play. Then records of the company. ये secondary data है. Internal company records such as financial statements and sales data provides insight on performance, market share, and financial health for informed decision making. अब कंपनीज किस हिसाब से बिजनेस कर चुकी है, क्या उन्होंने पास में सीखा है, हाउ दे हैव ऑल्टर्ड एंड कस्टमाइज्ड देयर स्ट्रेटजीज, आज उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको देखने के बाद आपको पता चलता है व्हाट यू शुड keep on doing and what you should keep on avoiding. It's a rigorous process. Environment scanning is not an easy process. It's a rigorous process. Government publications. Government publications are there that provide information on demographics, economic indicators, industry regulations, helping businesses to understand market size, compliance requirements and economic trends. तो बच्चे जब भी आप गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस को पढ़ेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलेगी वो डेमोग्राफिक्स मिलेगी. फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो आपको ये पता चल जाएगा डेमोग्राफिक्स के बेस पे कि आपका प्रोडक्ट कंट्री के किस पार्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा और किस पार्ट में आपका प्रोडक्ट कम एक्सेप्ट किया जाएगा. तो आप को डेमोग्राफिक से ये भी चीज पता चलती है, प्लस आपको पता चलता है पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इन वन स्पेसिफिक एरिया. फॉर एग्जांपल अ कंपनी वांट्स टू ओपन अ नाइकी स्टोर, तो नाइकी स्टोर आप हमेशा वहां पर ही खोलेंगे जहां पर आपको पता है कि डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इज एक्स्ट्रा, इज मोर, एलीट क्लास लिव्स ओवर देयर, और वहां पर नहीं खोलेंगे जहां पर द इनकम ऑफ द पीपल इज लो in comparison to the income of the people in other areas of that same city. So that tells you where to open your stores and where to do your business. So आपका economic indicator भी है, industry regulations भी है. आप अपनी इंडस्ट्री को अंडर व्हाट नॉर्म्स ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन नॉर्म्स क्या है, क्या आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना भी सकते हैं, कंट्री में नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल when you talk about McDonald's जिस भी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, it always operates on the basis of food that is permitted by that country. तो जहां पर वो फूड परमिटेड नहीं होता वहां पर वो फूड की रेगुलेशंस होती हैं, and they could not continue over there. Next is publication by financial institutions. Publications from financial institutions provide insights into economic trends, investment opportunities and financial risk for informed financial decision making. जब बच्चों बड़ी बड़ी मैगजीन्स छपती हैं तो वो आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं बाय टेलिंग इट टू यू क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं, वेदर द इंडस्ट्री इन विच यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या वो स्टेगनेंट हो गई है या वो लॉसेस में जा रही है. तो आपको कैसे पता चल सकता है? when you start analyzing the information from various publications of financial institutions. तो इससे आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल देम प्रॉपर्ली. Last, formal studies and strategic planners. Formal studies conducted by strategic planners offer in-depth analysis of market trends, customer behavior, and competition, providing data-driven insights and decision-making and long-term planning. जब आप strategic planners की formal studies को पढ़ेंगे तो आपको और in-depth information access मिलेगा regarding customer behavior, market trends, competition, and knowing about your competitors and the market trends. जब आप इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लोगे तो आप एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, and then you will put yourself in a position where you can start doing a business at a good level. So बच्चों, these
9 points help you to collect verbal information for environment scanning. The customers, wholesalers, retailers, distributors, consultants, records of the companies, government publications, publications by various financial institutions, and formal studies conducted by strategic planners. Let's move on to the last point, that is evaluating opportunities. एक बार opportunities आ गई, आपने उन्हें evaluate करना है, और वो कैसे करना है? With the help of 2 questions. Opportunity evaluation क्या है? Testing opportunities against important environment parameters, arriving at a sound business choice. Questions for evaluation कि जो opportunity आप evaluate कर रहे हैं, is it a viable data? जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, क्या ये डेटा आपके लिए काम करेगा? क्या ये डेटा आपके लिए काम नहीं करेगा? Does it make a sound sense to the business or it doesn't? So, let's talk about these things in detail. Opportunity evaluation. Testing opportunities against important environmental parameters. Assessing opportunities against economic, social, technological, and regulatory factors to determine their compatibility with the external environment. जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, क्या उसमें कोई regulations हैं, कोई rules हैं? अगर हैं, तो you have to follow it. If you're not following it and producing it without it, you are, put yourself in trouble. Next is evaluating market trends, customers' needs, competition, and industry dynamics to measure the potential success of the opportunity. जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बना रहे हैं, कस्टमर नीड्स के हिसाब से बना रहे हैं, क्या वो कंपटीशन से बेटर बना पा रहे हैं, क्या आप इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं, जो चेंजेस रेगुलरली हो रहे हैं, उनको मीट कर पा रहे हैं. टू मेजर द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपने इवेल्युएट की है, उसके बेसिस पर आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. Analyzing the feasibility of resources means availability of resources, capabilities and expertise required to capitalize on the opportunity. And you need to analyze the availability of resources, the human resource and expertise required to work on these opportunities. You cannot do it all alone. Opportunity evaluation is easy, but when you talk about assessing opportunities against economic and social regulatory factors, evaluating market trends, for that you require capabilities, require expertise, you require people. And if you can do it with them, it's well and good. But the best saying is that you cannot do without them. So एक opportunity evaluate तभी properly हो सकती है that if you are taking care of the customers, if you are taking care of the rules and regulations, and if you have right people with you. All in all, you cannot do much. Arriving at a sound business choice, integrating the findings from environmental analysis and opportunity evaluation to make informed decision. आप इंटीग्रेट करिए फाइंडिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो भी एनालिसिस है एनवायरमेंट का, अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन, अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करिए और एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए. Balancing risk and rewards associated with the opportunity to ensure a favorable outcome. और जो भी रिस्क हैं, रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, तो यू आर गोइंग टू मेक एरर्स, यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस. सो अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड्स को बैलेंस करके नहीं चलेंगे, देन यू कैन नॉट हैव अ फेवरेबल आउटकम. हो सकता है कि इनिशियली आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, यू आर गोइंग टू हैव सर्टेन चैलेंजेस दैट कम्स आउट एज रिस्क फॉर यू.
बट अगर आपने उन रिस्क को बैलेंस कर लिया, यू हैव टेकन प्रॉपर मेजर्स टू हैंडल दोज रिस्क, तो लेटर ऑन यू कैन हैव रिवॉर्ड्स एज। बट अगर आपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया एंड यू आर ओनली फोकसिंग अबाउट रिवॉर्ड्स, that is next to impossible. So arriving at a sound business choices like this, you can do considering strategic fit, financial viability and alignment with organization goals and capabilities when choosing the most promising opportunities. अब बच्चों, जब भी आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बहुत ही प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी को चूज कर रहे हो, तो आपने ये जरूर चेक करना है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट्स पहुंचाए, प्लस इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द कैपेबिलिटीज एंड नॉट कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल वायबिलिटी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो जो भी आपने अपॉर्चुनिटी चूज की है, इट हैज टू बी in sync with the goals of the organization as well as the financial viability. Matlab it should provide you financial profits as well, support as well. Now these are questions for evaluation. Is it a viable idea? आपको ये सब करने के बाद ये पता चलेगा कि आपका जो आइडिया था वो वायबल था या नहीं था. Assessing whether the idea aligns with the market demand, customer preferences, and emerging trends. Evaluating the feasibility of implementing the idea based on available resources, technology, and expertise. Considering potential obstacles, risks, and challenges that may affect the viability of the idea. तो बच्चों, जब आपने एक आइडिया को चूज किया, उस पर काम करना शुरू किया, तो आपको मार्केट डिमांड से, कस्टमर प्रेफरेंसेस से और इमर्जिंग ट्रेंड्स को मीट करने से पता चलेगा whether the idea is viable for you or not. Is it feasible to implement that idea or not? And available resources and technology and expertise is providing you support to fulfill that idea or not. You are going to access that. और उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा व्हाट आर द पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स, रिस्क एंड चैलेंजेस जिसने उस आइडिया को फुलफिल होने से रोका. So then you will find yourself in a better position where you can make that idea to be a great success for you and your organization. Does it make sound business sense? Analyzing the potential financial returns and profitability of the idea. Evaluating the competitive landscape and market dynamics to assess the sustainability of the idea. Considering the strategic fit with the organization's overall goals, missions, and long-term vision. तो बच्चों, अगर ये सब करने के बाद आपको लगता है that the business idea has worked for you, it has provided you financial stability, it has provided you future orders to fulfill, and it has used your capacities and capabilities of the human resource properly, it has served the market, it has served the market trends, it is a viable idea. Else it is not. So environment scanning goes on like this. So with this, we have come to the end of today's class, where we have taken SWOT analysis and framework, environment analysis, key steps of environment analysis, opportunity project interface, sources of information for environmental scanning, and evaluating opportunities. So I hope you have understood each and every point from today's class. If you have any questions, you can put it forward to me. After this, let's take a rigorous practice section where I have taken synopsis of today's class, vocabulary from the session, 10 important words along with meaning, short 10 questions from today's session along with answers, and top 10 objective type questions along with answers. Here are the answers. So, bachcho, don't forget to do this rigorous practice section. It is something of great importance. So thank you very much. So follow us on these channels, on these links. Until we meet you next time, bye bye for now. God bless you all. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye.